हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का मेरे तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 उसका हाफ सेक्शन देख रहे हैं। हाफ सेक्शन हमने पहले देखा हुआ था और उसका आगे का जो सेक्शन है उस सेक्शन का हम इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। chromosomal basis of inheritance. Yes, so first section was genetical basis of inheritance and this section is chromosomal basis of inheritance. However, there is no much difference. In genetic basis of inheritance we have studied detail about genes, genomes. We have detail studied about monohybrid cross, dihybrid cross, test cross, back cross, incomplete dominance, codominance, multiple allele, pleiotropy and polygenic inheritance. Yes, we have detail studied about all these things, and in this session we are going to detail study about chromosome. So let's begin how chromosome is. Yes, so we have studied that father of genetics Gregor John Mendel. Yes, we have studied up to today that father of genetics Gregor John Mendel has performed some experiment on monohybrid cross, some experiment on dihybrid cross, some experiment on trihybrid cross as well as polygenic hybrid or polygenic inheritance. But when he published his experiment, when the time was came to explain what he has done, we know that Mendel was belonging to the mathematics field. So his terminology was not related to biology, it was related to mathematics and statistics. And being a mathematician, he was unable to explain all the terms of monohybrid, dihybrid, trihybrid and polyhybrid cross in biological term. Therefore his findings, his discovery was rejected. मेंडल हमें पता है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहलाया जाता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि मेंडल मैथमेटिक्स फील्ड से थे। और जब मेंडल ने उनकी डिस्कवरी की हुई थी, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस की डिस्कवरी की हुई थी, तब जब उन्होंने पेपर पब्लिश किया तो पेपर पब्लिश करते समय उनको जो लैंग्वेज यूज करनी थी वो बायोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी, ना कि मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज। तो इस वजह से उनकी जो फाइंडिंग थी, डिस्कवरी, वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन इन 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट ने मेंडल की जैसी डिस्कवरी की। मेंडल की जैसी मतलब मेंडल जो चीजें कह रहे थे उन चीजों को फिर से इन्होंने डिस्कवर किया। और ये 3 साइंटिस्ट थे, हुगो डी व्रीज, आपने इनके नाम सुने होंगे, कार्ल कोरेंस एंड वॉन टेचमार्क। Yes, in 19th century, 3 scientists came. These scientists such as Hugo de Vries, Carl Coren and Erich von Teschmark. Now what these 3 scientists has done? These 3 scientists has performed same experiment like Mendel, like a monohybrid cross, dihybrid cross, trihybrid cross and polyhybrid cross, same like a Mendel. And they rediscover findings of Mendel. इन्होंने क्या किया? मेंडल ने जो डिस्कवरी की थी उसे फिर से डिस्कवर किया। क्यों? क्योंकि मेंडल ने जो चीजें डिस्कवर की थी उसका तो उनको अनसक्सेसफुल मिला,
एक्चुअली अगर हम देखें तो मेंडल प्रैक्टिकली सही थे, लेकिन मेंडल को वो चीजें एक्सप्लेन नहीं करते आ रही थी। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको बायोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझ में एक्सप्लेनेशन की कैपेसिटी नहीं है, मैं आपको अच्छे से अच्छे एग्जांपल देके आपको मेरी बात नहीं समझा सकता हूँ, तो मैं क्या फायदा उस टीचिंग का, समझ रहे हो? सो सेम वे मेंडल, उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था और उन्होंने बायोलॉजिकली फील्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन जब उन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्सप्लेन करना था तब उनके पास वो बायोलॉजिकल शब्द नहीं थे, तब वो बायोलॉजिकल टर्म्स यूज नहीं करते। इसके लिए उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। लेकिन हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेन और इरिच वॉन टेचमार्क, इन तीनों ने मेंडल की जो फाइंडिंग्स थी उसे रीडिस्कवरी की, और रीडिस्कवरी करने के बाद इन लोगों को अवार्ड दिए गए। लेकिन ये पता चल गया कि मेंडल की फाइंडिंग और इनकी फाइंडिंग एक जैसी है। और उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिनको हम कहते हैं सुटोन एंड बोवेरी। तो सुटोन एंड बोवेरी कौन है? These are two creditable person for the chromosomal theory. तो क्रोमोसोम को डिटेल में स्टडी करने वाले जो दो लोग थे वो थे सुटोन एंड बोवेरी, और सुटोन एंड बोवेरी को क्रोमोसोमल थियरी को क्रेडिट दिया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं क्रोमोसोमल थियरी क्या है, और उसके बाद हम क्रोमोसोम के बारे में काफी डिटेल में देखेंगे। Okay, so let's begin. Chromosomal theory. It was first time explained by the two scientists such as Sutton and Boveri. So Sutton and Boveri has studied practically that how chromosome work, and according to their findings they have given 5 important statement regarding the chromosome. तो एक्चुअली इन्होंने क्रोमोसोम, सुटोन और बोवेरी ने क्रोमोसोम को डिटेल में स्टडी किया, और डिटेल में स्टडी करने के बाद इन्होंने 5 प्रैक्टिकल कंसेप्ट बनाए। एक्चुअली 5 प्रैक्टिकली स्टेटमेंट बनाए, और उस 5 स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। मैं आपको वन बाय वन स्टेटमेंट लिख के समझाता हूं डिटेल में। फर्स्ट, गैमेट like sperm and ovum contain all hereditary informations. इज इट ट्रू और नो? अगर हम और आप ये चीज को डिस्कस करें, इस स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट सबसे परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट। देखिए, गैमेट लाइक स्पर्म एंड ओवम कंटेन ऑल हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। इट इज ट्रू और नो? यस, आई टेल यू हाउ इट इज ट्रू। सी, इट इज अ स्पर्म, यस, एंड दिस वन इज ओवम. Sperm have a 23 chromosome and ovum also have a 23 chromosome. Now this sperm have a 22 chromosome autosome chromosome, and one chromosome is sex chromosome. One chromosome is sex chromosome. I'll tell you in detail. See, chromosome. How many chromosomes do we have in our body? So we have around, actually we have 46 number of chromosomes. Now these 46 chromosomes are divided into two patterns. Yes, these two patterns are some 44 chromosomes are considered as somatic chromosome, are also known as a body chromosomes. Yes, 44 chromosomes are considered as a somatic chromosome, also known as a body chromosome. Whereas
two chromosome are considered as a sex chromosome. They are considered as sex chromosome. Yes, so these are somatic chromosome. 44. 44 means how much pair? So we have as a 46 chromosome we have a 23 pair. Yes, as a 46 chromosome we have a 23 pair in our body, and out of them 44 chromosome is 22 pair. 22 pair is considered as a somatic chromosome. Yes, and 2 chromosome means one pair. This one pair is considered as a sex chromosome. Sex chromosomes are also known as a germ chromosomes. So I will tell you, these 44 chromosomes are identical to each other. Like a chromosome number 1 and chromosome number 2 are identical to each other. Chromosome number 3 and chromosome number 4, they are also identical to each other. So they are basically somatic chromosome. They are also called body chromosome because they decide body character. Now sex chromosomes are also termed as a germ chromosome because they are responsible for determining gender of a new young one. आगे की जनरेशन में कौन आएगा, मेल आएगा फीमेल आएगा, वो हम सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये एक सिंगल पेयर होती है. अगर हम सिंगल पेयर ये डिसाइड करें तो ये कैसे होता है? इन केस ऑफ मेल, दे टू क्रोमोसोम, these are, one is a X chromosome and second one is also X chromosome. This is X and this one is also X. In case of female, there is a one X, मैंने उल्टा लिखी है यहाँ पे. In case of male, there is one X chromosome and then one Y chromosome. And in case of female, there are two X chromosomes. Yes, X and X. Now I'll tell you, this pair is called heterologous pair. This pair is called homologous pair. मैं जब आप क्रोमोसोम के थर्ड पॉइंट बताऊंगा ना, तो थर्ड पॉइंट भी बेसिकली इससे ऐसे मिलता जुलता होगा. Male have a one X chromosome and one Y chromosome. I must shorten the Y chromosome क्योंकि Y chromosome X chromosome से थोड़ा साइज में छोटा होता है. And in case of female, there are two X chromosomes. So female have a homologous pair and male have a heterologous pair. अब हमारा जो स्टेटमेंट वो देखिए, gamete like sperm and ovum contain all hereditary information. Now just see, this one is sperm and this one is ovum. Ovum have 23 chromosomes and sperm have 23 chromosomes. This sperm explain the characteristics of a male. Either it is a X chromosome or either it is Y chromosome. And this ovum express the characteristic of a female. In both the cases there is a X chromosome. So sperm और ovum ये जो गैमेट होते हैं इनके अंदर पूरी की पूरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है. अब आप ये समझ लीजिए, my facial expression is exactly matching to my mom and dad. Clear? And my baby's facial expression is exactly matching to me as well as my wife. How does it happen? Because when male and female undergo reproduction, male sperm, female ovum, when they unite with each other, their hereditary character picks up and enters into the child. So this is the first statement explained by the Sutton and Bowen. And to explain this, we have to use the help of a chromosome. Then second, cell which contain nucleus contain all hereditary information. Is it true? Yes, this statement is also true, and this statement is slightly similar to the above statement. See what happened in both the statement. In statement 1, gamete like sperm and ovum contain all hereditary information. Yes, but in this, cell which contain nucleus contain all hereditary information. मतलब ये यहाँ पे बताया गया है कि हमारी बॉडी में कोई भी सेल होती है, अगर उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे
और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे और क्रोमोसोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है। अब आपको पता होगा कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में किसी को डाउन सिंड्रोम होने वाला है, क्रोमोसोमल सिंड्रोम होने वाला है, फिर वो टर्नर सिंड्रोम हो, क्लेनफेल्टर हो, कोई भी हो, अगर कोई सिंड्रोम होने वाला है जेनेटिकली तो वो चीजें देखने के लिए हमें क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है। अगर मेरे अंदर का क्रोमोसोम की अगर मैं टेस्टिंग कराऊं तो मुझे ये भी पता चल सकता है कि मेरी आने वाली जनरेशन के ऊपर कौन सी क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी पता चल सकती है। So this is just because of chromosomal theory. Yes. See the third statement. Chromosome always found in pair means diploid, but sex cells are haploid. Example, sperm and ovum. Is it true or no? Yes, it's 101% true. और आप एज अ स्टूडेंट भी इजीली समझ सकते हो इस चीज को। सी क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, क्रोमोसोम ऑलवेज फाउंड इन पेयर, मतलब क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में एक पेयर में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। और अगर हम टेक्स्ट के लिए जैसे लैंग्वेज यूज करें तो ये आधा स्टेटमेंट दिया ही नहीं वहां, लेकिन अगर हम ये देखें तो आधा स्टेटमेंट हमें ऐड करना चाहिए। क्रोमोसोम ऑलवेज फाउंड इन पेयर इन डिप्लॉइड, बट sex cells are always found haploid. Example, sperm and ovum. अब आप ये देखिए, chromosome have a 46 chromosome, means our nucleus have a 46 chromosome. But which type of the cell have a 46 chromosome? Those which are diploid. But if you talk only about sperm and ovum, then these both cells are obviously haploid. अगर आप ये देखो कि हमारी बॉडी में सोमेटिक सेल कौन से हैं, तो हमारी बॉडी में स्पर्म और एग, इन दोनों को छोड़ के बाकी के सभी सेल सोमेटिक सेल हैं। और इन सभी सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमोसोम डबल होते हैं, मतलब जोड़ी में होते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं इनको। लेकिन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, फीमेल में ओवरी के अंदर जो ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हम एग कहते हैं या तो ओवम कहते हैं, तो ये सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 23। क्लियर है आपकी माइंड में? सो इन अवर कंप्लीट बॉडी ऑल द सेल्स आर सोमेटिक सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम, and sperm and ovum are containing 23 chromosome just because they are haploid, and all the somatic cells they are containing 46 chromosome just because they are diploid. Okay, so I hope so you understood this theory, diploid and haploid concept. Now statement number 4, which they have mentioned that chromosome segregate at the time of formation. Now see, if you could remember this theory, there was a second law of Mendel which was called law of segregation. Means when two chromosomes remain close together but never mix with each other and they separate at the time of formation, it is called law of segregation, also known as the law of purity. It was second law of Mendel. So this fourth statement is basically matching to second law of Mendel. What? Chromosome segregate at the time of formation. मतलब क्रोमोसोम जब आपस में पेयरिंग करते हैं उस समय वो आपस में सेपरेट भी होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब हमें इनको दो अलग अलग स्पर्म में डिवाइड करना है तो हम इनको अलग अलग कर देंगे।
ये 23 क्रोमोसोम वाला एक स्पर्म, ये 23 क्रोमोसोम वाला दूसरा स्पर्म. See, chromosome always remain close together, like a 46 chromosomes are close. But now we are interested to make a two sperm out of it. So one sperm will be having 23 chromosome, another sperm will be having 23 chromosome. So this 23 chromosome plus 23 chromosome, together it is 46 chromosome. But sperms are haploid, so we have to separate from 46 to 23 and 23. Yes. In case of female also there is a 23, but in case of female, both the sex chromosomes are XX, homo chromosomes, or you can say homologous chromosome. When chromosomes are identical in size and shape, अगर दो क्रोमोसोम साइज और शेप में आइडेंटिकल है तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. और अगर क्रोमोसोम साइज में आइडेंटिकल नहीं है, जैसे एक बड़ा है एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम छोटा है, तो इनको हम कहते हैं हेटेरोलोगस क्रोमोसोम. तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी 4 प्रॉपर्टी हो गई. 5th प्रॉपर्टी देखते हैं. यहां पे देखो, क्रोमोसोम कैन डैमेज, कैन रिपेयर. यस. अब आप ये देखिए 5th प्रॉपर्टी, क्रोमोसोम कैन डैमेज एंड क्रोमोसोम कैन रिपेयर. क्रोमोसोम डैमेज भी हो सकते हैं और क्रोमोसोम रिपेयर भी हो सकते हैं. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो क्रोमोसोमल थियरी के अंदर प्लेस की गई है. तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सुटोन और बोवेरी ने प्रैक्टिकली एनालाइज करके ये स्टेटमेंट बनाए थे. और ये 5 स्टेटमेंट मैं आपको पहले से फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. फर्स्ट स्टेटमेंट, gamete like a sperm and ovum contain all the hereditary information which is present in parents and going into the next generation. Second statement, cell which contain nucleus, it also have all the hereditary information which pass from one generation to another generation. Third statement, chromosome always found in pair, means in diploid, but in case of diploid cell. In case of haploid cell, they are found a single. Yes, they are found a single. Fourth one, chromosomes segregate at the time of formation. Means at the time of a chromosome formation, they get separated. And fifth one, chromosome can damage, chromosome can also undergo the repair mechanism. So this is 5 statement of a chromosomal theory which was explained by Sutton and Boveri as a creditable person for the chromosomal theory, and we have started concept called chromosomal basis of inheritance. So in this lecture, dear students, it was up to introduction and first point, chromosomal theory. We will see tomorrow on next section. Okay, thank you so much for watching this video. Hello all dear students, do you understood introduction? Do you understood introduction and chromosomal theory and their 5 sub points? Practically understood? Come on. If anybody have any doubt, please clear me, let me know. Then I will repeat it. If there is any doubt in your mind that you did not understood particular statement or particular sentence which is to be repeated, okay, nothing. Everyone understood clearly, no? Okay, so if you have understood this complete chromosomal theory, tomorrow we will discuss about structure of chromosome. We will discuss size, shape, structure of chromosome like a X and Y chromosome and normal somatic chromosome.